Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. So in this class we'll be continuing with the economic survey 2020 and 21 and union budget of 21-22. So this is second class for survey and budget. So as explained in that first class, this economic survey of 2021 contains in fact 10 chapters. State of economy, which is a macro view. Partly state of economy has been explained in that first video. Then in this class we will be covering the remaining part of that macro view and the fiscal development chapter completely. And after that, external sector, monetary management, price and inflation, sustainable development, agriculture and food management, industry and infrastructure services, and social infrastructure, employment and human development. So we'll be continuing with this second class with the macroeconomic view and the fiscal development part. Just to recap, in that first class or first video, state of economy has been explained. That means the growth rate, quarter 1, quarter 2, then half yearly and then annual, and composition of that growth has also been explained. Composition of that growth means what were the composition in that growth of industry or for services or for agriculture. So just to recap few things. Growth and composition, you can recall from that last video. Quarter 1 का growth था -23.9 and quarter 2 growth was -7.5. So and the half yearly growth was -15.7 and for the second half -0.1. ठीक है, so that will determine the overall growth rate. ठीक है, जो मार्च का डेटा के बाद आ जाएगा. So and the budget was expecting a growth rate of 11% in real GDP and 15.4% in the nominal GDP. And the meaning of real and GDP is the difference of inflation. Real GDP is nominal GDP minus inflation. And the important one was in fact the composition of growth, which contains agriculture growth rate of 3.4. Share of agriculture in GDP is 17.8. In occupational sector it is 54.6. Industrial growth was minus 9.6. So negative growth in industry and its share is 25.8. And for services it was negative 16% for H1 and minus 8.8 in that year, and the share of service is 54.53. so roughly just remember, share of service is 55%, industrial share is 25% and the remaining share is of agriculture. Leaving agriculture, the growth in industry and services was negative. So overall the growth was negative except for the agriculture sector. Now this was basically the composition part. Now when we come to the state of economy, the remaining part and the fiscal development part, mainly the fiscal development part. First you can start with this fiscal development. Remember, when we talk about budget or the fiscal policy part, it you can divide it into two different part. One will be the revenue side or trends in the receipt side, and the other will be trend in the expenditure side. Receipts and expenditure, that will basically, that means fiscal policy basically relate to government expenditure and taxation, but taxation is one part of receipt, it is not the only receipts. Now this receipt, remember in the last class also I have explained what do you mean by fiscal deficit or primary deficit or effective primary deficit or effective revenue deficit in fact. Now the receipts concept के फॉर्म में पहले डिवाइड कर लेंगे and then we can explain the trend part. So we will be explaining the trend after explaining this concept. Divide this receipt into two part. One is non-debt
मतलब जहाँ री ऑब्लिगेशन नहीं है रीपेमेंट करने का, देयर इज नो ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट, सो इट इज नॉन डेट. एंड द अदर इज debt receipts like borrowing. This non-debt receipts you can divide it into further part as one will be the tax, other will be non-tax, and third is non-debt capital receipt. One will be the tax, other will be the non-tax, and the third will be the non-debt capital receipts. ऑब्वियसली टैक्स में कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है गवर्नमेंट के लिए. टैक्स को आप फर्दर डिवाइड कर देंगे बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. Non-tax revenue like profit of public sector enterprises, that will be a non-tax revenue. Fees etc., that will be a non-tax revenue. Non-debt capital receipts, remember ये जो टैक्स लिख रहे हैं वो recurring in nature होता है, every time you have to pay. मतलब गवर्नमेंट के लिए वो रिसिप्ट है, every time government will be receiving that revenue. Non-debt capital receipts like disinvestment proceeds. कैपिटल रिसिप्ट कह रहे हैं मतलब वो वन टाइम होगा, यू गवर्नमेंट इज सेलिंग इट्स ओन एसेट and thereby government is getting some receipts, so it is non-debt capital receipts. So government ने अपने assets को sell किया है तो assets reduce हो रहा है government के लिए, but वहाँ कोई repayment obligation नहीं है, so in that way it is considered as non-debt receipts. So this non-debt capital receipts will be basically including disinvestment proceeds or recovery of loans. Example के लिए you can mention here, for example disinvestment and a recovery of loans. So if government has given loan, then if government is recovering that loan, it is part of that non-debt capital receipts. Clear? And this debt receipts basically comprises of the market borrowing. Market borrowing and other liabilities. फर्स्ट थिंग क्लियर रखेंगे, जब कभी आप रिसिप्ट्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स अगर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके दो पार्ट है, नॉन डेट और डेट रिसिप्ट्स. नॉन डेट एंड डेट रिसिप्ट्स, एंड द डेट रिसिप्ट्स इंक्लूड मार्केट बोरोइंग एंड द लायबिलिटीज. तो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट में आपने टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स किया है, बट उस टोटल रिसिप्ट्स में एक्सक्लूड कर रखा है बोरोइंग के लिए. ठीक है, वो बोरोइंग को एक्सक्लूड करते हुए ले रहे हैं. मतलब इंटायर जो रिसिप्ट्स है उसमें कहीं कहीं हमारा रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है. रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ये डेट रिसिप्ट्स के अंदर है. देयर इज नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर द नॉन डेट रिसिप्ट. सो जस्ट कीप दैट फैक्ट इन माइंड दैट टैक्स विल हैव टू कंपोनेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट के अंदर भी फर्दर डिवीजन आ जाएगा, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड पर्सनल इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी, दैट विल बी क्लबिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस. देन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड द कस्टम, मेनली थ्री पार्ट. What is important is that you must know the proportion और share. ठीक है, वो डेटा काफ़ी एग्जॉस्टिवली यहाँ पे गिवन है अलग अलग फॉर्मेट में कि ओवरऑल टैक्स का कितना परसेंटेज डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है. विद इन दैट हाउ मच इज द कंपोजिशन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जीएसटी. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट. एंड हाउ मच इज दैट टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. ठीक है, एक तो टैक्स का ओवरऑल कंपोजिशन होगा, उसके बाद उसका कंपोजिशन जीडीपी के अंदर प्रोपोर्शन. देन हाउ मच परसेंटेज इज बेसिकली द डेट रिसिप्ट्स. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सपेंडिचर साइड. ठीक है, एक्सपेंडिचर को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, वो लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग सम एसेट. So if construction of a road is there, it will be capital expenditure. But if government is giving salaries that will be to government employees, it will be considered as a revenue expenditure. वो recurring in nature होगा. So we'll come to that expenditure side later on. But fiscal development का मतलब ये complete है. और जब आप fiscal prudence को explain कर रहे हैं, fiscal discipline word use कर रहे हैं, तो you have to keep a match between receipts and the expenditure.
obviously receipts are less and expenditure is more, that is why there is deficit, but you have to manage that deficit, so it should be sustainable. So given this, now we can explain this, start with this revenue side first, and that in the revenue will be first explaining the tax side, and after that non-tax and the non-debt capital receipts. I will start with an important table here which is on page number 70. ठीक है, जो ओरिजिनल बुक होगी इकोनॉमी सर्वे की उसमें पेज नंबर 70 पे होगा. You can also make in this form. For this class it is table 1. This is composition of gross tax revenue in 2020-21 budget estimate. ठीक है, ये हेडिंग ला लेंगे, composition of gross tax revenue in 2021 budget estimate. Now first direct tax. Now direct tax is basically constituting 55% of total. Indirect tax remaining 45%. और remember जैसे जैसे direct tax का proportion बढ़ रहा है, the tax system is becoming more and more progressive. Equity का concept यहाँ hold करता है direct tax में. तो ये trend भी याद रखना है कि over a period of time the share of direct tax in the overall gross tax revenue is increasing and the share of indirect tax in the overall tax revenue is declining, but it is a better trend. Then out of that overall में अगर 55% में इसको further divide कर ले, for corporate income tax and tax on income, या personal income tax पे लिख सकते हैं आप, tax on income, it is basically income tax. So corporate income tax is 28% and tax on income is 26%. ठीक है, मार्जिनल वो ऐड करने पे कहीं डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट इट इज़ गिवन 26 and 28%. क्लियर, मतलब फ्रैक्शन को इग्नोर करते हुए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए गए. इनडायरेक्ट टैक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. One will be GST, which is 29%, union excise duty 11%, and custom 6%. ठीक है, तो ओवरऑल जो टैक्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है उसका कंपोजिशन हो गया, ये कंपोजिशन ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. सो यू कैन से लार्जेस्ट is GST, then corporate income tax, then personal income tax. So if you have to make an order, then ordering is GST, corporate income tax, tax on income, after that union excise duty, and then custom. ठीक है, सो ऑर्डरिंग याद रखिएगा इन केस कभी कभी ऑप्शन प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए, और वैसे जब आप कभी मेंस का ऑप्शन का पेपर लिख रहे हैं तो टैक्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ पे इस तरीके के डेटा को यूज़ करना है. ठीक है, हाउ मच इज दैट कंपोजिशन. सो दिस इज द फर्स्ट डेटा विच इज़ giving you information about the composition. Now the second one is basically talking explaining the same thing, but it is explaining same thing in terms of percentage. How much is the direct tax as a percentage of GDP, how much is a corporate income tax as a percentage of GDP. So second table will be basically for that. It is on the same page, page number 70. ठीक है, डेटा को बार बार अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको आपको रिपीट मतलब रिकॉल करने के लिए मतलब याद रखने के लिए यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, लास्ट क्लास का भी और इस इंफॉर्मेशन को भी. जो रेलिवेंट वन है उसको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ.
Now table 2, this is a taxes as a percent of GDP, taxes as a percentage of GDP. Now in this वो 2021 के लिए यहाँ पे अलग अलग ईयर के भी इंफॉर्मेशन गिवन है. सो फॉर डिफरेंट ईयर आई डोंट थिंक कि कंप्लीट आप 5-6 ईयर का डेटा वो पॉसिबल नहीं, बट जो करंट वन है और जो लास्ट ईयर का डेटा है एटलीस्ट वो पता होना चाहिए. सो मेक इट फॉर 2019-20 एंड 2021. ठीक है, ये बजट एस्टिमेट है, ये प्रोविजनल एस्टिमेट है. एंड देन उसी ऑर्डर में लिखेंगे ज़्यादा बेटर है. जीएसटी इज फॉर 2019-20 इट वाज 2.9. ठीक है, तो ये 2.9% ऑफ जीडीपी, 2.9% ऑफ जीडीपी इज वाज ग्रॉस टैक्स जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन 2019-20. इन 2020-21 3.1, और इससे पहले का इंफॉर्मेशन अगर रखेंगे तो ये 3.1 था. 3.1 डिक्लाइन टू 2.9, अगेन इंक्रीज टू 3.1. 18-19 से डिक्लाइन हुआ 19-20 में, और 2021 में अगेन इट हैज इंक्रीज टू 3.1. देन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सेकेंड 2.7% and 3%. Corporate income tax 2.17% and 3%. After that tax on income was 2.4 and 2.8. Union excise duty was 1.2, it is static 1.2, and custom was 0.5 improved to 0.6. क्लियर. तो ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है. तो लेटर से अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ मच इज द टैक्स जीडीपी रेशियो, टैक्स और जीडीपी का रेशियो, हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज टैक्स, सो इट इज बेसिकली सम ऑफ दीज. ठीक है, ये कंपोजिशन के फॉर्म में हो गए. सो इट विल बी अराउंड 11 or 12%, approximately 6, 4, 10, 10.7. ठीक है, इस बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली. तो बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली 10.7% इज बेसिकली टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. ठीक है, करेक्शन 6.14, इट इज 10.7% ओवरऑल. ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखिएगा. तो आपको कंपोजिशन मालूम है और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है, टेबल में ऑल दो 18-19 का भी गिवन है, उससे पहले का भी गिवन है. तो इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग द ट्रेंड, तो ट्रेंड के लिए आप उसको रेफर कर सकते हैं, बट करंट इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा रखना है. देन मूविंग टू दी नॉन टैक्स, और अदर कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अलावा भी है, वो आप टैक्स रिसिप्ट्स में ही कुछ पार्ट यहाँ मेंशन कर सकते हैं. सो राइट फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. अब ये नंबरिंग के फॉर्म में कर दीजिएगा, 1-2 के फॉर्म में. सो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स रेवेन्यू. राइट, द बजट 2021, the budget 2021 estimated gross tax revenue to be 24.23 lakh crore, 24.23 lakh crore, which is 10.8% of GDP. ठीक है, जो रफ इंफॉर्मेशन आ रहा है वो सेपरेट जो सेंटेंस गिवन है उसके अंदर 10.8%. सो जस्ट रिमेंबर 10.7 to 10.8% ऑफ जीडीपी इज द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू. Below that second statement, the direct tax, so direct tax comprising corporate income tax and tax on income. The direct tax
comprising mainly corporate and personal income tax, constitute around 55% of gross tax revenue. ठीक है, वो previous information में लिखा है 55% of gross tax revenue, 55% of gross tax revenue. Full stop. These were expected to grow at 12.7% relative to 2019-20 and 27.2% relative to 2019-20 provisional estimate. मतलब earlier was revised estimate and 27.2% relative to 2019-20 provisional estimate. That tax का information ये. और third, the indirect tax were expected to grow at 11.1% relative to 2019-20 revised estimate. ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिएगा revised estimate, 2019-20 revised estimate and 15% relative to 2019-20 provisional estimate. So this was all about one component, and that one component was taxation. ठीक है, receipts के दो साइड है, नॉन डेट एंड डेट. नॉन डेट में टैक्स और नॉन टैक्स लिखा था. ये इंफॉर्मेशन जो लिखा था वो इट वाज ऑल अबाउट टैक्सेशन. नाउ नेक्स्ट इज फॉर नॉन टैक्स. राइट, द नॉन टैक्स revenue comprises mainly interest receipts on loan to states. So center has given loan to states. On that loan, center is receiving the interest, so that will be a non-tax revenue. Non-tax revenue comprises mainly of interest receipts on loan to states and union territories, dividend and profit from public sector enterprise. Dividend and profit from public sector enterprise, including surplus of RBI, transferred to Government of India. Surplus of RBI transferred to Government of India. Clear? एग्जाम्पल याद रखना, बिकॉज क्वेश्चन के फॉर्मेट में हो सकता है कि उन्होंने सर्टेन एग्जाम्पल लेके और फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के कौन, विच वन आर पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स. सो इट इज़ इंटरेस्ट ऑन लोन, देन प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, डिविडेंड and the surplus of RBI transferred to the Government of India. Then next sentence, the budget 2021 aimed to raise 3.85 lakh crore of non-tax revenue, which is 1.7% of GDP. 1.7% of GDP, and it is a 0.1 percentage more than 2019-20 provisional estimate. ठीक है, तो दो इंफॉर्मेशन आप रिलेट कर रहे हो. टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज 10.7, 10.8. देन नॉन टैक्स रेवेन्यू इज अनदर 1.7. तो अगर ओवरऑल नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गए, तो अगर आपसे कभी किसी क्वेश्चन के अंदर, रिमेंबर ये रिसिप्ट्स आपने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, नॉन डेट एंड डेट. नॉन डेट टैक्स और नॉन टैक्स में टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 10.7, 10.8%, एंड दिस नॉन टैक्स इज
7%। क्लियर? तो ये जब ऐड करेंगे, इसमें जब आप ऐड कर दोगे नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा नॉन डेट रिसिप्ट्स हो जाएगा। ठीक है, उसमें टैक्स ऑब्वियसली द लार्जेस्ट कंपोनेंट, नॉन टैक्स विल बी अ स्मॉल कंपोनेंट एंड फर्दर विल बी दी नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को रिलेट कीजिएगा, मतलब पढ़ते समय थोड़ा जो गिवन है वो तो इन्फॉर्मेशन है ही, आपको ऐड करके ओवरऑल भी मालूम होना चाहिए और उसके कंपोजिशन मालूम होना चाहिए। देन जो फर्दर इंफॉर्मेशन नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर गिवन है दैट 1.7% इज़ फाइन। जैसे यहाँ पे टैक्स के हमने कंपोनेंटेशन किए हैं, वैसे नॉन टैक्स में भी अलग अलग फॉर्म हो गए। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट ऑफ सेक्टर एंटरप्राइज हो गया, सेंट्रल बैंक का ट्रांसफ़र हो गया टू दी गवर्नमेंट। सो इंफॉर्मेशन जो ओवरऑल नॉन डेट रिसिप्ट्स है, आउट ऑफ दैट 40% इज रेज थ्रू डिविडेंड एंड प्रॉफिट। ठीक है, इस पार्ट को आप सेपरेटली नोट कर लेंगे। आउट ऑफ टोटल नॉन डेट रिसिप्ट्स 40% is raised from dividend and profit, dividend and profit। ठीक है, इसमें अलग अलग टेबल गिवन है, बट डोंट गेट टू मच इन्वॉल्व इनटू द डेटा। जो रेलिवेंट वन है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको आप रजिस्टर में नोट कर लेंगे तो आई थिंक फिर उसको दोबारा आपको फिर सर्वे रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ कम टू दी नॉन डेट कैपिटल एसेट्स, which will be the third part। Non-debt capital receipts, read on first। It mainly consists of, so write the components here, it mainly consists of a recovery of loan and advances। remember लोन पे जो इंटरेस्ट आया था वो हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर लिखा है, वो रेवेन्यू अकाउंट में चला जाता है। और ये नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स हो गया, तो जो रिकवरी ऑफ लोन है दैट विल बी कंसीडर्ड एज नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल इन द सेंस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बार बार रिकवर नहीं होगा, इंटरेस्ट आप रेगुलरली ले रहे हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा दैट गवर्नमेंट विल बी गेटिंग ओनली वंस। सो इट कंसिस्ट ऑफ रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस एंड डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। रिकवरी ऑफ लोन एंड डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। Clear? Then the contribution of non-debt capital receipts, the contribution of non-debt capital receipts in the total pool of non-debt receipts, the non-debt capital receipts as a in the pool of non-debt receipts has declined from 6.8% to 3.9%, 6.8% to 3.9%, 3.9% in 2019-20, 6.8% was in 2018-19। ठीक है, नाउ जो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, कंपोजिशन ऑफ नॉन डेट रिसिप्ट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, related to that there is a table of you can explain that table here, it's on page number 71। ठीक है, मैं एक दो बार टेबल को जरा ध्यान से देख लेना, ट्रेंड और उसके कंपोजिशन या जो शेयर है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, वन इंफॉर्मेशन इज ऑफ जो रेड से मार्क्ड है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नॉन डेट रिसिप्ट्स है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नॉन डेट रिसिप्ट्स है। ब्लू वन जो टॉप पे है वो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स, एंड द लार्जेस्ट वन इज बेसिकली नॉन नेट टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नॉन डेट रिसिप्ट्स, नेट टैक्स रेवेन्यू
net tax revenue receipts as a percentage of total non-tax revenue receipts. So just remember, the largest component is the net tax revenue receipts as a percentage of total non-debt receipts. ठीक है, वो जैसे जीडीपी का अगर इंफॉर्मेशन मालूम है वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो कि वो 10.8% था, जो नॉन डेट रिसिप्ट थे या नॉन टैक्स रेवेन्यू थे वो दे वर जस्ट 1.7%. सो द लार्जेस्ट कंपोनेंट इज बेसिकली approximately say 75-78%. So lastly it is 72.8, earlier it was 77.4. So one table you can relate it from here. Then तो कंपोजिशन क्लियर है उसका, परसेंटेज जीडीपी में के अंदर क्लियर है, और जो रिसिप्ट साइड है आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दैट पार्ट नाउ. ठीक है, so one part was non-debt and the other is debt. Debt is basically including that market borrowing and the other liabilities. ठीक है, तो related to that debt बहुत ज़्यादा information नहीं है, but जो basic one सर्वे के अंदर explain हो रहा है उस part को सिर्फ short में लिख देंगे. Written one paragraph for this debt receipts. The total liabilities of central government. The total liabilities of central government include debt contracted against consolidated fund of India. Debt contracted against consolidated fund of India. इसे technically आप public debt कहते हैं. It is technically defined as public debt. As well as liabilities in public account. Liabilities in public account. Full stop. These liabilities include external debt. These liabilities include external debt. These liabilities include external debt. ठीक है, ये जो अलग अलग मैंडेट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो जो एक्सटर्नल डेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट और जीडीपी रेशियो है, दैट रिमेंबर दैट डेट जीडीपी रेशियो हैज़ कंसिस्टेंटली डिक्लाइंड आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट. तो ट्रेंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखेंगे रिलेटेड टू द डेट. सो वन इज ऑन पेज नंबर 75. Trends in the center debt GDP ratio. So 2004-5 it was very high, approximately 55%. So after the enactment of Fiscal Responsibility Budget Management Act in 2003 and बाद में उसके further revision भी है, so it has declined consistently. And lastly obviously अब because receipts कम होंगे कोविड इम्पैक्ट के बाद, टैक्स रेवेन्यू कम होंगे, जो नॉन डेट रिसिप्ट्स है वो कम होंगे, तो गवर्नमेंट का जो डेट है वो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज है, वो सेंटर के लिए भी एज वेल एज फॉर द स्टेट एज वेल. तो इट वाज स्टेडी बट इट इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू राइज. सो मार्जिनली जो हायर ट्रेंड है वो अब शो हो रहा है. ठीक है, फॉर द इंफॉर्मेशन. तो इट दिस शोज द टोटल लायबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी डिक्लाइंड स्टेडली इमीडिएटली आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ FRBMA एक्ट 2003 and has sustained at a level during the last decade. ठीक है, जो गवर्नमेंट की टोटल लायबिलिटीज़ है उसके कंपोनेंट याद रख सकते हो. कंपोनेंट बेसिकली इंक्लूड टोटल लायबिलिटी बेसिकली इंक्लूड दिस A, B and C. So A is public debt. That public debt include internal debt and marketable securities or non-marketable securities. Then external debt and other is extra budgetary resources. ये तीनों मिला करके गवर्नमेंट की टोटल लायबिलिटीज़ है. सो आफ्टर दैट इज ऑल अबाउट स्टेट फाइनेंसेस. स्टेट फाइनेंसेस उतना प्रोमिनेंटली कवर्ड नहीं होता सर्वे के अंदर, जस्ट मेंशनिंग है उसका. सो बिफोर मूविंग टू द एक्सपेंडिचर साइड, देयर इज अ टेबल ऑन
page number 68, which talks about trends in the deficit. Trends in deficit. ये टेबल आप रेफर कर सकते हो पेज नंबर 68 पे. It talks about the trend in effective revenue deficit, primary deficit and the fiscal deficit. Fiscal deficit is this green line. Effective revenue deficit और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में तो मैं जो बेसिक इंफॉर्मेशन है लास्ट 2021 का और 2019-20 का और 18-19 का लास्ट 2-3 ईयर की इंफॉर्मेशन मैं लिख दे रहा हूँ, उसको कॉपी करेंगे. So you can take for the year 2018, 19, 19-20 and 2021 और बजट के जो इंफॉर्मेशन होंगे वो फर्दर 21-22 के लिए. वन इज फिस्कल डेफिसिट, $3.4, $4.6, $3.5. Then primary deficit. Primary deficit is fiscal deficit minus interest payment. Primary deficit is was 0.4, 1.6, 0.4, and इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू डेफिसिट में से जो ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को दिए वो माइनस करने के बाद इज 18-19 इट वाज 1.4, 2.4 एंड 1.8. ठीक है, ये ट्रेंड एनालिसिस मेजर जो इंडिकेटर है डेफिसिट के उसके लिए. जो स्टेट ऑफ इकॉनमी है मतलब फिस्कल फ्रंट पे जो स्टेट ऑफ इकॉनमी है रिलेटेड टू दैट इन द इनिशियल पार्ट एक इंट्रोडक्शन गिवन है, वो आप ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के लिए भी याद रखेंगे और जहाँ कहीं आपको आंसर स्टार्ट करना सब्जेक्टिव डिटेल चाहे वो जीएस पेपर 3 के लिए है या ऑप्शन के लिए है, यू कैन स्टार्ट विद दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ. मतलब जहाँ पे रिसेंट इम्पैक्ट अगर पूछा जा रहा है कि कोविड के कंटेक्स्ट में क्या इम्पैक्ट था, so can write one paragraph here. During the year 2019-20, the structural reform initiated by central government, to boost the economic performance, had fiscal implications for the economy. Fiscal implications for the economy. Full stop. As a result, the fiscal deficit for 2019-20, this one, fiscal deficit for the year 2019-20 stood at 4.6% of GDP, 4.6% of GDP, which was 0.8% higher. ठीक है, previous 0.8% higher than 0.8% higher than fiscal deficit in 2019-20 जो revised one है, फिस्कल डेफिसिट ऑफ 2019-20 रिवाइज एस्टिमेट. ये जो प्रोविजनल एक्चुअल्स है, जो प्रोविजनल एक्चुअल वैल्यूज़ है वो ये है,
और जो रिवाइज एस्टिमेट था 2019-20 के लिए उससे 0.8% इट वाज हायर एंड 1.2% हायर, 1.2 परसेंटेज हायर, ये कंपेरिजन प्रीवियस ईयर से होगा, 1.2% हायर देन फिस्कल डेफिसिट ऑफ 2018-19, 2018-19. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे द मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, medium term fiscal policy statement presented with budget, medium term fiscal policy statement presented with budget 2021, presented with budget 2021, fix the fiscal deficit target at 3.5%, this value 3.5% for financial year 2021, for financial year 2021. ठीक है, तो यार देखिए मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसीज गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना होता है जब कभी वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट का जो प्रोविजन है उसके करस्पॉन्डिंगली जो टारगेट्स है उसको अगर अचीव नहीं करती है देन इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट टू प्रेजेंट अ मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट विद अलॉन्ग विद द बजट. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसिप्ट साइड यू कैन से. नाउ बिफोर मूविंग टू द स्टेट्स जस्ट फोकस ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. ठीक है, जो सेकंड साइड हो जाएगा बजट का वो एक्सपेंडिचर साइड है. जैसे टैक्स के अपने कंपोनेंट याद रखें वैसे एक्सपेंडिचर के भी कंपोनेंट याद रखने और एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. सो यू कैन राइट हियर एक्सपेंडिचर. ठीक है, डन. फर्स्ट वन ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट द बजट 2021. ठीक है, देखिए जो 21-22 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होना है. अभी जो आप असेस कर रहे हैं वो लास्ट ईयर को असेस कर रहे हैं कि बजट में क्या प्रोविज़न था और हमने एक्चुअल में क्या अचीव किया. ऑन द एक्सपेंडिचर फ्रंट बजट 2021 एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर एट 30.42 lakh crore, 30.42 lakh crore, comprising a revenue expenditure of 26.3 lakh crore and capital expenditure of 4.12 lakh crore. Capital expenditure of 4.12 lakh crore, which work out to be 11.7% and 1.7% of GDP. 11.7% of GDP and 1.7% of GDP. ठीक है, डेटा को जरा ध्यान से रखिएगा. यू नो द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है. कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्रिएटिंग एसेट्स. सो डेवलपमेंट के पर्पस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस है वो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो टोटल एक्सपेंडिचर इज़ 30.4. आउट ऑफ दैट 26.63 is on revenue expenditure, remaining 4.12 is on capital expenditure. So in terms of percentage, in terms of GDP, it is 11.7 and 1.7. So 11.7 and 1.7, 12, 13.4%. 13.4% आपका expenditure है as a percentage of GDP. And what was the receipt side? Receipt side was basically tax was 10.8, then non-tax revenue 1.7
एंड द अदर, ठीक है। तो ये 13.4% एक्सपेंडिचर साइड में, सो क्लियरली ऑब्वियसली देयर इज अ डेफिसिट, सो एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज होगा एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू द रिसीप्ट साइड, ठीक है। तो मेजर वन है उसको याद रखेंगे, टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, टैक्स का कंपोजिशन, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल का प्रोपोर्शन। तो परसेंटेज अगर आप ओवरऑल इसके कंपोजिशन को अगर एक्सप्लेन करते हैं, जैसे रिसिप्ट्स में आपने टैक्स के अंदर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंपोजिशन लिखा है, वैसे अगर यहाँ कंपोजिशन लेते हैं तो ये कंपोजिशन 11.7% है और 1.7% है, तो आउट ऑफ 13.4 11.7, तो 75-80% इज बेसिकली दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रिमेनिंग इज कैपिटल वन। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वहाँ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वन गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट पैराग्राफ में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर which constitute over 87% of total expenditure, ठीक है। वो जो 11.7% था, it was 87% of the total expenditure. Revenue expenditure which constitute over 87% of total was expected to grow at that means increase expected to grow at 11.9% in 2021. ये जो 87% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, इट इज एक्सपेक्टेड टू फर्दर इंक्रीज बाय 11.9%, ठीक है। और जो उससे पहले का इंक्रीज था वो 17% था, मतलब प्रीवियस ईयर के लिए। अब यहाँ जो एक्सपेंडिचर फ्रंट के अंदर जो कंपोजिशन है, मतलब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्लियर है 11.7%, टोटल एक्सपेंडिचर में उसका शेयर 87% है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है। इंटरेस्ट पेमेंट, इसके अंदर आप फर्दर डिवाइड कर लीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट इज 26%, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज 9%, मेजर सब्सिडीज इज 10%, मतलब फूड सब्सिडी हो गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो गया, मेजर सब्सिडीज इज 10%, grants in aid to states is 22%, grants in aid to states is 22%, and pension is 8%. ठीक है, तो मेजर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके कंपोनेंट में इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑब्वियसली लार्जेस्ट बिकॉज ऑफ हायर डेट, देन ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स 22%, पेंशन 8%, मेजर सब्सिडीज। तो इफ यू नो द कंपोनेंट देन फॉर आंसरिंग एनी क्वेश्चन लाइक व्हाट शुड बी डन, मतलब फिस्कल सजेशन अगर कहा जाता है आपसे, तो फिस्कल सजेशन के एक्चुअल में दो साइड होंगे, one will be the revenue front and that will be the expenditure front. So if you know the expenditure, how to reduce expenditure, so unless you know the composition which one is the largest, so largest is interest payment, but that is mainly because of the mismatch between receipts and the expenditure. So you have to reduce that gap. The moment you reduce the gap, this burden will come down automatically. So you have to target basically on the major subsidies, then पेंशन अमाउंट। सो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहाँ हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं,
बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर का इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ भी लिंक होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी होता है बट डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश नहीं होता। तो ये जितने भी मेजर कंपोनेंट हैं दे आर बेसिकली 65% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो मेजर आइटम्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के वो ओवरऑल एक्सपेंडिचर के 65% है, मतलब ओवरऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इटसेल्फ इज 87%, और ये जो मेजर कंपोनेंट लिख रहे हैं वो टोटल एक्सपेंडिचर का 65% है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन हियर। एंड तो टैक्स जीडीपी रेशियो वगैरह वो क्लियर हो गया अब, और जो कंपोजिशन एक्सपेंडिचर के अंदर है वो क्लियर है। देन अनदर पार्ट इज बेसिकली in the same expenditure front you can write one more important paragraph. With a low tax to GDP ratio, with a low tax to GDP ratio, central government faces the challenge of providing sufficient fund for investment and infrastructure expansion. With a low tax to GDP ratio, central government faces the challenge of providing sufficient funds for investment and infrastructure expansion while staying within the bounds of fiscal prudence. That means you have to fulfill that fiscal target as well. So keeping that fact in mind and the given low tax to GDP ratio, government is facing a challenge of providing sufficient fund for investment and infrastructure expansion. Therefore, improving the composition and quality of expenditure, assumes significance. So you have to not only spend, but you have to spend qualitatively. Quality of expenditure assumes significance. So over the past few years, the quality of expenditure measure होगा how much is your capital expenditure as a percentage of total, because that has a link directly with the economic growth. So quality of expenditure will be measured or expressed basically in terms of percentage of capital expenditure in the total expenditure. Over the past few years, the quality of expenditure measured in terms of share of capital expenditure in total expenditure, has on an average sustained at a level of approximately 87.5. ठीक है, टेबल आप इसको जब रीड करेंगे पेज नंबर 73 पे, so this red one is capital expenditure as a percentage of total expenditure. ठीक है, so it has increased steadily and then in 2020-21, तो just last के trend के accordingly we can say that it is increasing but more or less steady. And this dotted line blue one is revenue expenditure as a percentage of total expenditure. So revenue expenditure as a percentage of total expenditure is declining and capital expenditure as a percentage of total expenditure is increasing, which is a good sign. ठीक है, so one is the share, other is the trend. तो ट्रेंड में यहाँ रखेंगे बिकॉज ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं, यहाँ रखिएगा
जहाँ पे स्टेटमेंट गिवन होता है डिक्लाइनिंग है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर ना भी हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज declining and capital expenditure as a percentage of total expenditure is increasing. Capital one is this red one and the blue one is for revenue expenditure. ठीक है. ये इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू दैट एक्सपेंडिचर साइड एंड द रिसिप्ट साइड. रिसिप्ट्स टैक्स के फॉर्म में, नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में, नॉन डेट रिसिप्ट्स, डेट रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू और कैपिटल में मेनली एक्सप्लेन किया गया. ठीक है. ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो क्लियर है. रिसिप्ट साइड में टैक्स नॉन टैक्स मिला करके और ये नॉन डेट मिला करके. ठीक है. ये परसेंटेज जो एज अ परसेंटेज जीडीपी उसको थोड़ा रिपीटेडली बोलना है आपको सो दैट वो याद हो जाएगा. नाउ रिलेटेड टू द रिफॉर्म्स देयर आर सर्टेन इंफॉर्मेशंस गिवन मेनली विथ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. So we can make one heading here, reforms in tax administration. Reforms in tax administration. ठीक है. ये भी यहाँ पे मैं एक इनिशियल जो पैराग्राफ गिवन है वो कोट कर रहा हूँ. उसे एक दो बार खुद से अगर आप लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट इन पेपर. ठीक है. वो इन्फॉर्मेशन आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लिख रहे हैं कि अगर किसी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो या व्हाट मेजर्स हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन द रीसेंट ईयर्स. रीसेंट ईयर्स का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सर्वे के अंदर इफेक्टिवली गिवन है. वर्ड्स इफेक्टिवली यूज़ किए गए और वेरी क्लियरली वो मेंशन हो रहा है. जो की वर्ड्स हो जाएंगे वो उसमें आ जाएंगे. तो just write one paragraph for that introduction part and you can use it anywhere. Remember, the government has consistently adopted reform measures. The government has consistently adopted reform measures aimed at long-term benefits of a more transparent, efficient and taxpayer friendly tax administration. Long term benefits of a more transparent, underline that, efficient and taxpayer friendly tax administration. Full stop. A major step in this direction is introduction of honoring the honest platform. Honoring the honest platform. Underline that, honoring the honest platform. Full stop. The platform for transparent taxation. The platform for transparent taxation hyphen honoring the honest was launched in August 2020 with an objective to impart greater efficiency, transparency and accountability. ठीक है. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए, ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड टू एलिमिनेट physical interface, that is physical in relation between
the taxpayer and the tax authority. Eliminate physical interface between taxpayer and tax officer. Taxpayer and tax officer. Full stop. The key features of platform are A. Use of technology, comma, data analytics, and artificial intelligence. Use of technology, data analytics, and artificial technology. And B. Recognizing taxpayer as partner in nation building. Recognizing taxpayer as partner in nation building. ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर याद रखेंगे. ठीक है, एग्जैक्टली सेम लिख देना है. मतलब ये क्वेश्चन ऐसे जनरली लास्ट बजट में या लास्ट ईयर क्या क्या मेजर्स लिए गए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या रिफॉर्म के लिए, वो जनरल स्टडीज़ 3 के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं. डायरेक्टली जो लिंक होगा जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देना है. ऑप्शन में डायरेक्टली सिर्फ ये नहीं होगा कि लास्ट ईयर क्या किया गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मीन्स 1991, सिंस 1991, सिंस यू कैन से राजा चिलैया कमेटी. तो वहाँ से जो रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म के जितने भी मेजर्स हैं आप ओवरऑल ओवर अ पीरियड एनालाइज कर दें. उसमें फोकस हो सकता है कि व्हाट स्पेसिफिक मेजर्स हैज बीन टेकन इन द रीसेंट पास्ट. तो रीसेंट पास्ट में जो आ जाएगा उसके में डायरेक्टली ऐसे इंफॉर्मेशन यूज़ कर लेने. तो दो इम्पॉर्टेंट फीचर है. एंड देयर आर सर्टेन, द प्लेटफॉर्म स्टैंड्स ऑन 3 pillars of tax administration reform. The platform, that is on honoring the honest. The platform stands on 3 pillars of tax administration reform. Tax administration reform. A. Faceless assessment. Faceless assessment. Second, faceless appeal. And third, taxpayers charter. Taxpayers charter. ठीक है, फेसलेस असेसमेंट मतलब इंटरफेस नहीं होगा टैक्स पेयर का और टैक्स ऑफिसर का. फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर्स चार्टर. ठीक है, जैसे रीसेंट बजट के अंदर भी, लास्ट करंट बजट के अंदर भी जैसे कहा गया कि लास्ट 3 ईयर के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट या 6 ईयर के अंदर डिस्प्यूट है वही ओपन किए जाएंगे. मतलब बहुत सारे जो ओल्ड हैं केसेस हैं वो रीओपन नहीं होंगे. तो एक तरीके का वो टैक्स सिंप्लीफिकेशन है. इट इज़ मेकिंग टैक्स पेयर फ्रेंडली मोर. नेक्स्ट पे आपने दी प्लेटफॉर्म इज डिज़ाइन टू इंश्योर, द प्लेटफॉर्म इज डिज़ाइन टू इंश्योर fairness. The platform is designed to ensure fairness by adopting measures like random selection through system using data analytics, and artificial intelligence, comma, dynamic jurisdiction, comma, automated random allocation of case, comma, team based assessment या review, comma, provision of draft assessment order,
and no requirement of physical interface, no requirement of physical interface between taxpayer and income tax department ठीक है, यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया, बट वो क्वेश्चन के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है, आपने ये 3 जो पिलर है वो लिख दिए। ठीक है, अब इसकी जो वर्किंग है फर्दर वो अलग अलग असेसमेंट के फॉर्म में है। फेसलेस असेसमेंट का प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया। सो दैट इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक फॉर एनी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से कोई क्वेश्चन क्रिएट हो रहा हो। देन अदर इज़ फॉर फेसलेस अपील, फाइलिंग ऑफ अपील बाय टैक्स पेयर, फिर उसके बाद का जो स्टेप है वो सारा एक्सप्लेन किया जा रहा है। और इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स पेयर चार्टर। ठीक है, तो बॉक्स 3 के अंदर वो इन्फॉर्मेशन। टैक्स पेयर चार्टर के अंदर मेनली अर्लियर रिफॉर्म मेजर्स में क्या होता था, जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते थे उसके लिए डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स में या इनडायरेक्ट टैक्स में भी ओम्बड्समैन स्कीम होते थे, मतलब सेटलमेंट प्रोविज़न के लिए। तो वन ओम्बड्समैन स्कीम वाज क्रिएटेड इन 2003 फॉर इनकम टैक्स एंड इन 2011 फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसकी जगह the institution of ombudsman for direct and indirect tax therefore abolished in February 2019. The present tax grievance redressal system consists of grievance cells headed by Department of Official. मतलब 1 पैराग्राफ आई थिंक जो रेलिवेंट है जहाँ से क्वेश्चन मे बी क्रिएटेड, वो पेज नंबर 66 पे है। ठीक है, इनकम टैक्स का ओम्बड्समैन 2003 में, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए 2011 में, इट वाज ऑलरेडी देयर। The current situation is that the institution of ombudsman for direct and indirect taxes were abolished in 2019. The present tax grievance redressal system consists of grievance cells headed by department official, Aayakar Seva Kendra, e-Nivaran portal, which is a separate and dedicated window for grievance redressal in the income tax business application. So just e-Nivaran portal and जो ओम्बड्समैन स्कीम है उसकी जगह अब ये रिप्लेस हो गया प्रेजेंट टैक्स ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। ठीक है, तो जो ग्रीवांस सेल है इट इज़ हेडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफिशियल, ई निवारण पोर्टल एंड आयकर सेवा केंद्र। रेस्ट इंफॉर्मेशन आई थिंक फैक्ट के लिए जो इंफॉर्मेशन फिजिकल फ्रंट पे थे, फिजिकल डेवलपमेंट में यू हैव डन विद दैट। इंट्रोडक्शन वगैरह आपको स्टार्ट में हमेशा पढ़ना है, मतलब इन द सेंस किसी और क्वेश्चन के लिए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इट इज़ ऑलवेज बेटर, बिकॉज कोविड कंटेक्स्ट में ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन है, तो जस्ट रीड इट। बट ये नहीं कह रहे कि यहाँ से डायरेक्टली कोई शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन बन रहा है। ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जैसे अप्रोच के लिए आप इनिशियल जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है उसको पढ़ना है। ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड some informations are given in the earlier chapter which was state of economy. तो state of economy like this type of table, state of economy वाले chapter में trends in GST collection, तो एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, जैसे लास्ट 3 मंथ में अक्टूबर नवंबर दिसंबर और आज की डेट में अब आपके पास जनवरी और फरवरी का डेटा भी अब है। ठीक है, तो वी कैन से दैट इट हैज़ बीन मेंटेन्ड ओवर 1 लाख करोड़। ठीक है, तो 1.5, 1.05, 1.15 और फरवरी का आई थिंक 7% का ग्रोथ ही है, तो 7% का ग्रोथ है, दैट मीन्स इट हैज़ इंक्रीज फर्दर। सो वी कैन से दैट नाउ इट इज शोइंग सम buoyancy. So as economy will recover, it is expected that the GST collection and the overall tax revenue will also increase. In the state of economy chapter, पॉलिसी रिस्पॉन्स जो ग्लोबल लेवल पे है वो है, और जो स्टेट लेवल पे मतलब नेशनल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी रिस्पॉन्स लिए थे उसको एक चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया। ये अगर आप पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। पॉलिसी पैकेज इन इंडिया टू कॉम्बैट कोविड-19। कोविड-19 in fact we are not explaining this class in terms of that
medical emergency. We are basically explaining in terms of the impact on the economy. तो एक टेबल स्टेट ऑफ इकोनॉमी वाले पार्ट में विच इज पॉलिसी पैकेज इन इंडिया. जब कोई पॉलिसी रिस्पॉन्स अगर आता है, मान लेट अस से सम क्वेश्चन इज ऑन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड in the medium run and the likely impact in the long run, and what measures have been taken by government to mitigate it or to reduce that. So one measure was always the containment. ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए. तो वो इंफॉर्मेशन तो हमेशा रहेगा. वी कैन से नाउ ऑलमोस्ट दैट फेज इज ओवर, बट स्टिल देयर मे बी सम waves again coming. ठीक है, as we are seeing in महाराष्ट्र एंड केरला. तो एक ऑब्जेक्ट एक हो जाएगा कंटेनमेंट के लिए, बट द सेकेंड वन विच वॉज मेजर इज द फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, जो फिस्कल पॉलिसी मेजर्स हैं उसके अंदर आपको अलग अलग स्कीम में, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान. तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज 1, तो पैकेज 1 के अंदर क्या क्या किए, तो वो कंप्लीट माइन्यूट फॉर्म में नहीं करना है, बट जस्ट रिमेंबर दैट इन द एज अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी और एज अ पार्ट ऑफ फिस्कल स्टिमुलस, गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग, और गवर्नमेंट adopted basically the expansionary fiscal policy part. So in that expansionary fiscal policy part, particularly in order to provide boost to the economy also and boost or recovery for the aggregate demand also, सर्टेन प्रोविजंस हुआ देयर. तो ये फिजिकल रिफॉर्म्स में अलग अलग मेजर्स गिवन है. ठीक है, इसको आप चाहे तो रेफर करके, जो इम्पॉर्टेंट वन है यू कैन, दिस ऑन पेज नंबर 38. ठीक है, वन विल बी द कंटेनमेंट मेजर्स, तो रिलेटेड टू द स्कूल क्लोजर एक्सेट्रा, वो सारे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिकल मेजर्स में हेल्थ, वेलफेयर, टैक्स मेजर्स, डिमांड पुश, इन्वेस्टमेंट पुश. ठीक है, जो मेजर इन्फॉर्मेशन होंगे वो आप कहीं कहीं यूज़ कर सकते हो, लाइक गरीब कल्याण रोजगार अभियान, लाइवलीहुड क्रिएशन इन द रूरल एरियाज, टैक्स एंड कंट्रीब्यूशन पॉलिसी चेंजेस, सपोर्ट टू स्टेट्स, लिंकिंग बोरोइंग टू द रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स फॉर MSME, देन expansion of partial guarantee scheme to help NBFC and MFI, special credit facility to street vendors. तो इट इज ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें ये सारा लिखना होगा. हाँ, फॉर एग्जांपल आप 2-3 इंपॉर्टेंट वन को यूज़ कर सकते हैं. सो इट गोज़ ऑन टू फिजिकल पॉलिसी मेजर्स में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2, बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, LTC वाउचर स्कीम, फेस्टिवल एडवांस. ये प्री दिवाली के पीरियड के जो भारत पैकेज 2 था उसके इंफॉर्मेशन है. मतलब गवर्नमेंट, मतलब सर्वे ने एक्चुअल में सारा इंफॉर्मेशन दिया कि हाउ ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड एंड ड्यूरिंग दी अनलॉक what measures has been taken by the government to related to that fiscal and related to the monetary as well. तो monetary measures में mainly it was policy rate, liquidity, assessment and loan. तो policy rates के अंदर like lowering of repo and reverse repo rate by 1.15 and 1.55% respectively. You can use, I think क्वेश्चन के लिए ज़्यादा यूज़ हो सकता है आपके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चर, MSME, लेबर, बिजनेस, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्री, स्पेस. एग्रीकल्चर में फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. ये जो 3 एग्रीकल्चर के प्रोविज़न है और करंट एस्पेक्ट में जो कंट्रोवर्शियल भी है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ याद रखना है. मतलब आंसर लिखते समय यू कैन से दैट द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड कंटेनमेंट मेजर्स, फिजिकल मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स. ठीक है, वैसे करके आपने पहले पॉइंट बना दिया. फिर फिजिकल मेजर्स के अंदर ये किए गए 1 पैराग्राफ. मॉनेटरी मेजर्स इंक्लूड दिस, कंटेनमेंट मेजर्स इंक्लूड दिस, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स covers areas of agriculture, MSME, labor, business and so on. In agriculture, these measures were taken related to MSME and related to labor. तो structural reform के अंदर जो measures लिए गए वो जो major वन है उसको आप cover कर सकते हैं. तो ये 37th
पेज पे 38, 39, 40, 41, ये 4 पेज के अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली गिवन है। तो कंटेनमेंट मेजर्स हो गया, फिस्कल मेजर्स हो जाएंगे, उसको स्ट्रक्चरिंग करें तो मॉनेटरी मेजर्स, तो वर्ड्स वहाँ पे की वर्ड यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप गवर्नमेंट रिस्पॉन्स या पॉलिसी रिस्पॉन्स लिख रहे हैं तो जो वर्ड यूज़ किया गया गवर्नमेंट वर्जन के अकॉर्डिंगली ट्राई टू यूज़ दैट वर्ड। देन स्ट्रक्चरल मेजर्स, और ये करके फिर फॉर ईच वन यू कैन से 1 पैराग्राफ, सो दैट बिकम, बिकॉज कोई आंसर अगर आप लिख रहे हैं अराउंड 150-200 वर्ड्स का, तो उसमें कोविड का इम्पैक्ट भी है और फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी रिस्पॉन्स और पॉलिसी एक्शन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसमें कीजिए। अब इस क्लास के अंदर हमने अब मोस्टली इन दिस क्लास आई कवर्ड द फिजिकल डेवलपमेंट पार्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट स्टेट ऑफ इकोनॉमी। So including this class now we have done with state of economy and the fiscal development, ठीक है। state of economy याद रखेंगे, ये हर चैप्टर के अंदर आ रहा है, कुछ पार्ट जो यहाँ नहीं होंगे वो, जैसे ये ओवरव्यू होता है, तो ये इट वाज बेसिकली ओवरव्यू ऑफ ऑल, सो सम आर ऑलरेडी इंक्लूडेड, जो यहाँ नहीं लिखा गया वो इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे इसमें। तो आई थिंक इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टेकिंग दिस एक्सटर्नल सेक्टर एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट। क्लियर? डेटा को बार बार रिपीट करना, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो भी आप लिख रहे हैं या जो आप मार्क कर रहे हैं, तो जस्ट ये नहीं कि सर्वे के अंदर हमने अंडरलाइन कर दिया या सिनॉप्सिस मार्केट में जो अवेलेबल है उसी के अंदर हमने अंडरलाइन कर दिया। आप अपने पास डेटा प्रिपेयर करोगे, लिखोगे अपने नोटबुक के अंदर, ठीक है, वो उसकी मेमोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। मतलब आपने अपने हाथ से अगर उसको लिख रखा, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव रिटन इन दिस फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं, और इस डेटा को आप रेगुलर बेसिस पे, मतलब एवरी 4 to 5 days, वीक में एटलीस्ट वंस जस्ट गो थ्रू विथ ऑल द डेटा, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेटा बढ़ जाएंगे, तो वीकली एक बार देखते रहेंगे तो फिर वो लर्न हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने एक बार डेटा लिख लिया, समझ लिया, 1 month लेटर, 1.5 months लेटर अगर आपने बीच में दोबारा उसको रिवाइज नहीं किया तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न। और ऑप्शन मतलब एग्जामिनेशन में, मेंस वगैरह में तो अगर वो फिक्स है, आपने कई बार उसको लिख रखा है, फिर तो फ्लो में आ जाएगा, अदरवाइज डेटा वगैरह नहीं आ पाते, लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है डेटा को। उसका एक ही ट्रिक है, उसको आपको बार बार पढ़ना है, सीधे उसको रिपीटेडली अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर वो याद हो जाएगा, जो मेजर बनोगे वो याद हो जाएंगे, ठीक है। सो विल कंटिन्यू विथ इन द नेक्स्ट क्लास विच विल बी लेक्चर 3 फॉर इकोनॉमी सर्वे विथ एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, थैंक यू।